Every year, the land of Punjab reverberates to the strains of joy and sorrow as another generation gears up to leave for greener pastures abroad. But there are times and instances the songs are all tragic. When desire turns to desperation. When deals between families go sour. For years, the tragic stories of Punjabi migration were about young men marrying for dowry to fund their exit and never coming back to claim their bride. Across the state, there were abandoned brides of runaway foreign grooms. But the times they are changing and the tables seem to have turned. Today, across Punjab can be heard the stories of brides commanding a dowry and taking off for foreign shores, never looking back at their husbands, abandoned to a life of dashed hope. In the story of migration out of Punjab, there is now a trend of reverse dowry, with all its attendant evils. The difference being that this time, the men are shedding tears, running from pillar to post to get their money back, and the women who are never coming back. Hello and welcome. I'm Jayati Narula. A large number of people, especially the youth from Punjab, travel abroad in the hope for a better life. In rising contractual marriages, the bride or the groom or their families together enter into some sort of an informal contract in which the boy or his family is willing to pay for the girl's education and travel abroad on the condition that once she completes her education or gets PR, a permanent residency of the foreign country, she is going to apply immediately for a spouse visa. However, often several young men discover that once the woman is abroad, she has a change of heart, leaving the grooms high and dry. Behind the lush green fields of Dhanola village in Punjab's Barnala district, Balwinder Singh, a 53-year-old farmer, and his wife Rupinder's lives are shattered. The distraught family looks sadly over photographs of their only son, Lovepreet, who died by suicide in June this year. Barnala police had earlier registered a case of cheating under Section 420 on Beyant Kaur, wife of Lovepreet, alias Ladi, but after much pressure slapped a case of Section 306 of IPC. Abetment to suicide charge was registered after his life story went viral, an intervention from State Commission of Women. His has been the case of reverse dowry and contractual marriage. Marriages are made in heaven, as they say, but not all marriages are. There have been cases of dowry much earlier in Punjab, but now there is a changing trend, and the trend has been reversed as the girls are doing much better. Sometimes there are contractual marriages where both sides enter so that the girl who goes abroad takes the husband there along. But in many cases, things don't have a happier ending. सारा ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਰੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ सारा टोटल खर्चा साडा है जहाज टिकटां भी ਅਸੀਂ लेते हैं जो हमारे पास एविडेंस प्रूफ आए ना लाड़ी की डेथ के बाद उसको दाह संस्कार कर दिया जो रीति रिवाज होते हैं वो पूरे हो गए जब उसका मोबाइल ओपन किए तब हमें पता चला कि वो लड़की लवप्रीत बहुत 2 साल से तकरीबन चीट कर रही थी इसको इग्नोर कर रही थी इसका फोन नहीं सी पिक कर रही इसका किसी भी मैसेज का वो रिप्लाई नहीं सी कर रही इवन लवप्रीत ने उसको कम से कम 7-8 और पूरी चैट में बोला कि यार मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूँ अगर तेरी लाइफ में कोई और लड़का है तो तू वहां सेटल हो जा मुझे बता दे मतलब एक जगह वो लिखता है कि यार अगर ये बात समाज में निकलेगी बाहर दोनों परिवार की इंसल्ट होगी बेइज्जती होगी. Lovepreet's family now wants action against the girl and her family. The allegations leveled by Lovepreet's family have been denied by Beyant Kaur's family. मेरा काका चला गया साडा जमा जी नहीं लगता जे तुसीं सच पुछदे हो पर सानू कुछ नहीं मिल रहा असीं धक्के खा के थाने दरबारी मुड़े आउंदे आ कि साडा कुछ नहीं बना रहे सानू इंसाफ मिलना चाहिदा जी. ਗੱਡੀ 'ਚ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ. There are pros and cons to a contractual marriage. If all goes well,
Both the boy and the girl are settled well and they're able to get in other family members as well. A dream comes true. But on the other hand, if things don't go well and if the boy is not able to go abroad, the dream is shattered. And in this case, in a tragic ending of Lovepreet, he is no more. His family now fights for justice. Now this is a case of reverse dowry. The fact is that a life has been snuffed out. Who will get justice, and will it be a long wait for that? With camera person Kirpal Singh, this is Kamaljit Sandhu in Dhanaula for India Today. India Today meets another man, 30-year-old Jasvinder Dhaliwal, also from Barnala. Relatively shy, Jasvinder wears a tangy green t-shirt with Statue of Liberty, a stark reminder of what was once his dream. Married to a woman in 2019 with suitable IELTS qualification with the aim to settle in Canada, but was instead cheated like Lovepreet. Jasvinder spent nearly 25 lakh rupees to send the girl to Montreal in Canada. शादी के तकरीबन एक मंथ मेरे साथ रही है, उसके बाद वो कनाडा में चली गई। कनाडा में जाकर थोड़ा समय मेरे से बढ़िया रही है, 2-3 मंथ के बाद मेरे से बात करनो हट गई, जो बिल्कुल बंद कर दिया उसने बात करनी। और उसके बाद मैं अपने सास सहुरे के साथ मतलब गलबात करी भी, मेरे घर वाली भी बात नहीं कर रही, तो उसने समझाया बहुत, पर फिर भी गलबात नहीं करी। और लेकिन मेरे उल्टा मेरे घर वाली ने दहेज का केस पवा दिया था, दरखास्त दी है, जो कि उनकी दरखास्त थी जो बेबुनियाद पाई गई है, झूठी पाई गई है। और उसके बाद हमने दरखास्त लगा दी थी, जो कि बरनाले में SSP साहब के पास, जो कि उसमें भी नहीं, पुलिस ने मेरा कोई इंसाफ नहीं दिया। To relief of Jasvinder, the woman's complaint did not stand. However, a compromise was reached and the girl's family returned 6 lakh rupees, though they had promised 9. Jasvinder now has given up his plans to settle abroad. ऐसे सोच रहे थे भी, हमने पहला था भी IELTS साफ कर लेंगे, पर मम्मी डैडी कहने चल कोई बात नहीं, अपन लड़की ले लेते हैं बढ़िया, बाद में तेरे से बुला लेगी। और फिर ले लिया था रिश्ता, चल कोई बात नहीं भी ठीक है, पर पता नहीं था अभी धोखा दे देगी बाद में। हम हुन नहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर हुन तब एक यहाँ से बनाना है, पंजाब में बनाना चाहते हैं, क्योंकि धोखा है, बहुत बड़ा धोखा हो गया है, पहले ही धोखा हो चुका है, दोबारा को मन नहीं करता बाहर जाने को। The lush green fields of Punjab have been romanticized in movies like Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, but the trends in Punjab have changed with the rise of contractual marriages. A calculative decision is taken by the Grooms family to invest in the girl and her studies, in the hope that the girl will make it to abroad and it will be the boy's ticket to settling. But much will depend on the happily ever after, especially because all depends on the goodwill carried on by the girl on the fact that Dulhan Dulha le jayegi. The State Commission for Women in Punjab has stated that the trend of contractual marriage and reverse dowry are worrying. And both centre and state need to work together to stop this crime. देखिए कार्रवाई तो बनती है, चीट इज चीट, फ्रॉड फ्रॉड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लड़की लड़के वालों के पैसे लगा के चीट कर रही है, उधर जाके किसी और के साथ रिलेशन बना रही है या उसको बुला नहीं रही है, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से जो हमारी पंजाब में बच्चियां सफर कर रही हैं, अब 30,000 केस है। कुछ तो बेचारी हार मान के बैठ गई हैं, मूव वो नहीं कर पा रही हैं, लड़कों ने उन्हें धोखा दे दिया। एक तो तरफ पंजाब वो दर्द झेल रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने कंसर्न ही नहीं दिखाया, वो दर्द झेल रहा है, ऊपर से अब ये रिवर्स शुरू हो रहे। मेरा ये मानना सख्त से सख्त इस चीज को रोकना चाहिए, इमीडिएटली रिएक्शन सरकारों का भी निकल के आना चाहिए। ये बड़ा संजीदा मुद्दा है। लगातार Last month, over 100 youth had joined protests in Barnala over reverse dowry. Gulati even wrote to Canadian Prime Minister Justin Trudeau to put in place a mechanism to deport those defrauding innocent Punjabis under the garb of arranging wedding ties. An NGO worker says that while the women qualify, the opposite gender are faced with unemployment and even drugs, making women move to greener pastures.
A victim herself, where her husband disowned her after moving abroad, she now helps even men who go through the same trauma. जब लड़कियों के साथ धोखा हो रहा था वो स्टार्टिंग से हो रहा है। काफी साल हो गए लड़कियों के साथ लड़के शादी करते थे लेकिन वहां जाके सेट हो जाते थे तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को वहां यहाँ इंडिया से नहीं बुलाते थे। लेकिन अब थोड़ी देर पहले से ये 4-5 साल से ये होना स्टार्ट हो गया कि आइल्स की वजह से जो लड़के हैं वो लड़कियों के ऊपर पैसा लगाते हैं, लड़की को बाहर भेजते हैं स्टडी बेस पे, और वो लड़की अगर वहां पे सेट हो जाती है तो अपने पति को वो वापस वहां अपने पास नहीं बुलाती। इसका रीजन हम यही कह सकते हैं कि वहां पे उन लोगों को, उन बच्चों को ब्राइट फ्यूचर नजर आता है। यहाँ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, नशा है और बहुत सारी ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो यहाँ अपने इंडिया में आना नहीं चाहते। According to official data, 4,266 complaints were received by the NRI wing of Punjab Police in 2019, which included cases of cheating, matrimonial dispute and property dispute. The complaints were filed by both men and women. In 2020, this number stood at 3,829, while in 2021 so far, 2,358 complaints have been lodged. Recently, the NRI Affairs Department of Punjab Police and MEA did a meeting in Delhi over the rising cases and how to jointly address them. When the girls are going abroad, they are also entering into what has come to known as a contract sort of a marriage, wherein the boy's family finances their education abroad with expectation that once they get a permanent residency, they will get the boy also abroad. So this has changed a bit, and in the past year or so, you suddenly find large number of boys coming forward and complaining that girls are not inviting them abroad or not sending their sponsorship abroad, or they are playing wayward with them. One of the reasons could be the restrictions imposed on travel because of the COVID. So that could be one of the reasons. And second could be also that within their, for the girl to get a permanent residency there are certain conditions she has to meet with regard to her education. She should be scoring above a little benchmark marks, and some of the girls do not manage to make up to that benchmark, therefore they cannot call their husbands. Marriage contracts are often arranged via personal contacts or middlemen, but rush to go abroad means parents are openly announcing reverse dowry in matrimonial advertisements in Punjabi newspapers. One such ad says, a bride is needed with a 6-band IELTS score, father in government job. Another says, needed a girl willing to settle abroad. The expenses will be borne by the boy's family. A third matrimonial ad says, IELTS girl is needed. The boy is Jat. We will spend the money. वो IELTS वगैरह कर लेती हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी फैमिली मतलब इतनी अफोर्ड नहीं करती कि बच्चों को, हमारी लड़कियों को मतलब बाहर चली जाए अपने आप। वो कहते हैं कि लड़का ऐसे दो जो हमारी बेटी को बाहर ले जाए, भी सारा उसका बाहर जाने का खर्चा उठा ले। ऐसी प्रोफाइल्स आ रही है। तो कैसे, ये क्या ढूंढना मुश्किल है या बिचौलिए ऐसा काम करते हैं कि मैरिज ब्यूरो के पास भी ऐसे काम आते हैं? नहीं नहीं, हमारा काम है सिर्फ हम आगे प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी फैमिली आप खुद देखें। हम दे देते हैं रिश्ते, उनको बता देते हैं, वो अपनी इंक्वायरी खुद करे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर इसमें जैसे धोखाधड़ी के केसेस, धोखाधड़ी, हाँ, तो भी हम थोड़ा, हम जो हमारे जानकार है हम वही करवाते हैं, अदरवाइज नहीं। जो जानकार हो रहे हैं ना रिश्ते, वही हम करवाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये जेंडर गैप की वजह से है, क्या है? बच्चों को पता नहीं, बाहर जाने का हमारे इंडिया में इतना जैसे हो है नहीं, बच्चों को है आइलेट्स करनी है, बाहर जाना है, बस ऐसे ही है। बच्चे मतलब बाहर जाके भी उनको पता है कनेडा जाके थोड़ा ज्यादा फैमिली सेट हो जाएगी, ऐसे बच्चों को थोड़ा बाहर जाने का ज्यादा क्रेज है आजकल। बाहर जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे, ये नहीं पता, फैमिली को भी नहीं पता क्या कर रहे हैं बच्चे। पंजाब में क्या है, बोलना नहीं चाहिए, लड़के हम लोग स्टडी में थोड़ा ध्यान कम देते हैं, तो लड़की आईएलटीएस कर लेती है। लड़की का आईएलटीएस किया हुआ तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या परमानेंट मैरिज अरेंज की जाती है, तो लड़की को स्टडी बेस पे जो उसका एक्सपेंसेस आते हैं वो लड़का पे करता है, लड़की की फैमिली पे करती है। लड़की बाहर चली जाती है, उसके जाने के बाद
मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखने को आ रहा है कि लड़की वहां जाके सेट होती है, पीआर अप्लाई करती है, वर्क परमिट लेती है और वहीं पे अपनी सेटिंग कहीं कर लेती है और लड़के को बुलाने की वो मतलब जरूरत नहीं समझती। वहीं पे कोई लड़का मिल गया या कैसे भी हो गया, वो वहीं पे सेटिंग करके मैरिज करके जो भी करना है करके वहां पे सेट हो जाती है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट लड़का करता है और वो बेचारा यहीं रह जाता है। यहाँ पे पुलिस है, सरकार है, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके तहत तो क्या होता है, लड़की का पासपोर्ट कंपाउंड हो जाएगा, लड़की इंडिया नहीं आ पाएगी, उसे आके करना क्या है, जहाँ पे उसकी फैमिली वहां चली जाती है तो उसने क्या लेना यहाँ आके। 120 kilometers away from Barnala is Ghandra village, tucked away in Jalandhar district. We meet Dr. Manjeet Singh, who is busy spending much time between going to his own medical store and the courts in Jalandhar. His wife, Jasvinder Kaur, was 8 months pregnant when she left for the United Kingdom in 2012. Married for 2 years then, he readily paid 20 to 22 lakh rupees for IELTS, visa and college fee and her flight tickets, fully trusting his wife. But soon after he realized that his wife had no plans of being with him or calling him to the UK. विजय बाहर जाएंगे सब कुछ हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैडम हमने पैसा लगाया, सबको लगा दिया, लेकिन हमारे पास पैसा कुछ नहीं बचा मेरा। अब मैं वकीलों के पास, जज के साथ सबके सामने में जा चुका हूँ, वुमेन सेल में जा चुका हूँ, लेकिन मुझे सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मेरी एफआईआर हो रही है, कहना सुनी में मैडम इसका मेन इशू था भी घर में आप कोठी पाइए पहले, तो उसके बाद ही हम जहाँ पर आएंगे। लेकिन जब ये बच्चा पैदा होने के बाद, पक्का होने के बाद इंडिया आती है, हमारे पास नहीं आती और सीधा अपने पेट के परिवार जाती है, वहाँ हम लेने जाते हैं। लेकिन जब इसको लेने जाते हैं वहाँ भी हमारे पास धक्का मुक्की होती है, हमारे परिवार के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। Manjeet Singh, now 38, alleges that his wife had remarried a Pakistani man while he is running from pillar to post. A growing number of youngsters willing to go abroad do not have to look further, as there are mushrooming institutes which will give them consultancy and charge them to ensure that they have a future abroad. But not many are able to make it. Some of them do get duped, whether it's through marriages or by consultants. The reason for this is that there is, one, lack of enforcement. The other is that those numbers of going abroad and a life much bigger than what is being shown on the screen is a dream that they want to live for. This means that IELTS and visa consultancy business is booming in Punjab, with maximum number of advertisements and billboards and banners announcing this. India Today travels to Patiala, where several centers have mushroomed. Girls performance देती है अपने best, boys भी performance best देते हैं। कई बार ऐसा होता है बॉयज सोच लेते हैं कि अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो हम गर्ल्स के थ्रू अपना बाहर करियर सेट कर सकते हैं। कईयों का जर्नी ही होता है कि हमने इकट्ठे ही जाना है, कईयों का जर्नी होता है कि चलो अगर हमारा लड़की के घर वालों का फाइनेंशियल सपोर्ट कम होता है तो वो कोई लड़का ढूंढते हैं कि कोई हमें लड़का मिल जाए अगर कुछ सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ मैंने देखा है कई इंस्टीट्यूट्स में लड़के आते हैं कि हमें इस कास्ट की लड़की चाहिए कि आइल्स करी हुई भी, हमने उससे शादी करके अपने लड़के को बाहर भेजना है। कोर्स के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में कुछ पता है कि नहीं? Consultants feel it is time to regulate institutes who are there to make a quick buck to ensure students fall into a trap. जो लोग एट पार बाहर जाने के काबिल नहीं थे, हो सकता है वो लड़के भी हों, और शायद कुछ लड़कियों के केस में भी हो, भी लड़कों ने शादी कर ली, लड़के ने आइल्स किया है, कई जगह लड़की ने ज्यादा आइल्स किया है। तो कहीं ना कहीं तो ये ट्रेंड इसलिए चला कि जिनके पास, लोगों के पास वेल ऑफ है, वो कहते हैं कि हम पैसा लगा देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कीजिए, हमारे बच्चे को निकाल दीजिए। और ये गलत है, मैं तो इसको एथिक्स के खिलाफ मानता हूँ, ये नहीं होना चाहिए और सोसाइटी के खिलाफ भी है। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक लाइसेंस फीस रखी है, दे आर नॉट टेकिंग एनी टेस्ट ऑफ द नॉलेज, जो जरूरी है, जैसे कि कनाडा में होता है और न्यूजीलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। वहाँ अगर आपको एजेंट बनना है तो आपको एक खास टेस्ट पास करना पड़ता है, नॉलेज बेस्ड, वो हमारे यहाँ नहीं है। इसकी वजह से लोग पैसे भर देते हैं, जिसके पास है वो बन जाता है और वो लिक्विडेटिव ऑफर्स देके, और लोग भी हमारे कुछ, मैं इसको कसूरवार मानता हूँ, वो लिक्विडेटिव ऑफर्स के पीछे भागते हैं रादर देन कि वो ये सोचें कि मुझे सही जेन्युइन कंसल्टेंसी और सही कोर्स कौन बता रहा है। इसकी वजह से लोग कैरियर काउंसलिंग लेने नहीं आ रहे, वो वीजा काउंसलिंग लेने आ रहे हैं। इस दोनों चीजों में बहुत फर्क है। For those who make it, life abroad seems larger than life.
YouTube is filled with those aspirants gushing about life abroad. So much so, there are also spoofs on internet with lakhs of views. मेरे ब्रदर की तरफ से मेरे ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं वो, और उन्होंने फाइलिंग की थी तभी तो मेरा रिफ्यूजल लेटर आ गया था। वो कह रहे थे कि एक बार विजिट किया तो वापस नहीं आएगा। तो मैंने अब दोबारा किसी आईडीपी वाले हैं उनसे मैंने की थी कन्वर्सेशन, वो कह रहे थे आप दोबारा अटेम्प्ट कर तो कनाडा का कर सकते हो। 3 years। तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले? हम, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। तो क्या प्लान है? आपके हस्बैंड नहीं कर रहे हैं ये कोर्स? नो। क्यों? इंटरेस्टेड नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो दोनों में से आप में से तो एक ही जाना चाह पाएंगे उस हिसाब से? मैं अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी, बेबी को भी लेके जाऊंगी। तो ये जैसे हम लोग अभी सुनते हैं कि कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस होती हैं या ये है, तो आप लोगों ने भी पहले से तय करके रखा है कि बाहर सेटल होना है? नहीं, ये सारा प्लान है आफ्टर मैरिज किया बाहर जाने का। मैरिज तो पहले कुछ भी नहीं है। अच्छा, और वहाँ पे जाके क्या करेंगे? जॉब करूंगी, स्टडी करूंगी, मास्टर डिग्री करूंगी और बेबी का फ्यूचर बनाऊंगी बढ़िया तरीके से। तो परिवार ने क्या सोच के रखा, आगे का क्या सोचा? हस्बैंड क्या करेंगे? हस्बैंड फार्मर है। तो वहाँ पे क्या करेंगे? वो अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए, एमकॉम बीकॉम किया, वो अपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। एजुकेटेड है वो। In Punjab, several of the students are queuing up to institutes to ensure they have a future abroad. Somehow the girls seem to be brighter and making it better. And that is why there are boys who are looking for girls who can ensure not only their future abroad, but also take their spouses. What is also interesting is that if all goes well, dreams will turn into reality, but not for all. Some of them turn into nightmares. Punjab government is very aware of the situation, but blames the pandemic for further complication in the road to reverse the trend. The government has looked into this issue and government has started its own foreign placement and education cell within the Department of Employment here. We have started this cell, but this cell has not been able to take off again because of the COVID. The fields of Punjab has become the battleground for sexes. In many sense, the patriarchy has been challenged by the theory of reverse dowry. It may not be for the good, but it has definitely has a changing trend, an impact on the society, where women who were earlier considered a liability are now an asset, perhaps even a hook to go abroad.